Om Shanti, Sat Sri Akal. Welcome to God, G-O-D, Gems of the Day, Gurbani of the Day, Gyan of the Day. Appa, in this episode, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਆ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ उस एक परमात्मा जो कभी माँ के गर्भ में आकर जन्म नहीं लेंदा that supreme soul that never takes birth in the womb of a mother never has a body that one एक और अगो असी जो पढ़ने सतनाम मूल मंत्र दी असी विचार कर रहे हैं सतनाम वो सत्य है ही इज ट्रूथ मीनिंग बदलता नहीं है वो हमेशा लिए ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਤਿਅਮ ਸ਼ਿਵਮ ਸੁੰਦਰਮ ਸਤਿਅਮ ਇੱਕ ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਡ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਮਤਲਬ ਲਿੰਗ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮ ਆਤਮਾ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਿਵ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੀਡ ਹੈ ਉਹ ਮਾਂ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਦੀ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਆ ਹੈ वो हमेशा लिए मैं माँ के गर्भ में आकर जन्म लेती हूँ आई लिव दिस लाइफ एंड देन आई लीव द बॉडी एंड आई गो इनटू अनदर मदर्स वूम्ब एंड आई लिव अनदर लाइफ एंड ऐसे तरह आई लिव मैनी लाइफ्स सो आई हैव डिफरेंट बॉडीज डिफरेंट नेम्स लेकिन द सोल इज ऑलवेज सतनाम द सोल इज ऑलवेज ओम 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 आत्मा स्पिरिट इन ईच लाइफ टाइम शरीर द ना this lifetime I'm Amarjeet, next lifetime I might be Mary, and another lifetime I might be Zarina, and another lifetime I might be Thirawat, could be a male or female as well, right? Thai or Asian or Chinese, Russian, any nationality, any religion, each lifetime I live. Can you imagine that? So मैं आत्मा सतनाम और ओ शिव परमात्मा ओ सतनाम है ही है पर क्योंकि वो क्लियर है वो सतनाम है क्योंकि उसका शरीर है ही नहीं मैं इतना क्लियर नहीं हूँ पर मैं भी सतनाम हाँ क्योंकि मैं उसकी बच्ची हाँ पर असी साडा दूजा नाम हो जाता शरीर का नाम आत्मा ओम है लेकिन शरीर का नाम हो जाता अमरजीत तो वी रिलेट टू ईच अदर एज आर नेम्स इन ईच लाइफ टाइम इस वास्ते असी भुल जाने हाँ कि असी है सतनाम असी बाहरली नाम दे विच फस जाने ते भुल जाने इस वास्ते कई वारी कईयां ने नाम बदली किया जो उन्होंने परमारथ राह ते चलने लगे जैसे व्हेन यू स्टार्ट वॉकिंग द पाथ ऑफ स्पिरिचुअलिटी यू स्टार्ट you change your name because नाम बदल देंगे ने क्योंकि नाम दे नाल बहुत फॉल्स कूड़ जिस गुरबानी भी लिखिया ना कि कूड़े टुटे पाल एक कूड़ नू असी एक झूठ नू किवें असी तोड़ सकने हैं सो समटाइम्स बाय चेंजिंग द नेम देन आई चेंज माई आइडेंटिटी सो in the Brahma Kumaris shuru mein what happened when somebody wanted to walk on the Paramarat path on the path of God and to have Gobind Milan and understand a Onkar so they start naming them Om like put Om in front so that you remember your soul so like I would be Om Amarjeet and somebody else would be Om Sam or Om Radha or Om Neelam or Om Christina or Om any we put Om in front so you're clear that you're Om. That's a good way of remembering that I'm a soul. Satnam. So Satnam is that true name, the identity that I'm a soul and I'm his child कि मैं उसकी बच्ची हाँ. So that's Satnam. And when we understand Satnam then we also understand Karta Purakh because if he's the doer and the giver and the creator फिर मैं भी तो कर रही हूँ इस शरीर में आके
और जैसे वेरी सिंपल, मैं कपड़ा स्टिच कर रही हूँ, कपड़ा बना रही हूँ, उन्हें काट के मैं आई कट इट एंड आई मेक अ नाइस ड्रेस. So I became the creator of that dress, right? Like this, everything in the world has been created. These lights, these screens, this television, or the chair, or the table, or the curtains, or the buildings, or the skies, or the cars, or the aeroplanes, or the ships, सारे बने ने ना, आदमी ने बनाया है ना, आत्मा शरीर विच रह कर बनाया है, तो आत्मा क्रिएटर हो गया. तो क्योंकि अकाल पुरख दे गुण, God's qualities and the qualities of the soul is same, because we are his children, right? But just that we forgot our quality and we forgot our ability sometimes, and otherwise we are actually, as a soul, if we go deep, we are as powerful as anything. We are very, very powerful, and that's why these amazing souls, जो इतने high souls ने, oh, they could sit on the Tati Tawa and not feel the heat also. They had that power inside to go beyond the body. And Jesus on the cross, you know, so these are amazing stories to understand for us, as they were like role models, you can say. So Karta Purak, so we are the doers, the creators, or Akal Purak is the greatest doer and creator, because ये सारा सृष्टि खेड बन गया और असी खेल खेल रहे. We've come from home, from Paramdham, to play a role on earth, to play a role in a human body, and to have a name and come in the womb of the mother. So we are Satnam, we are Om, from the Ek, and we are the Karta Purakh, we are the doers, we are doing, and we are living, we are enjoying, we are doing. So we are the creators of whatever is happening, whether it's happiness or sadness. जो भी हो रही है, दुख सुख सब असी create कर रहे हैं, असी कर रहे हैं, करन वाले हैं. तो कर्ता पुरख, लेकिन वो कर्ता पुरख है एक, जरा कि the bigger picture of all of it. Karta Purakh, Nirpo. You know, whenever we feel I'm afraid, fearful, very scared, fear, dar, then we have to repeat this word Nirpo, because Nirpo is so powerful. Because Atma, why Nirpo? Why fearlessness? Because I'm tinier than an atom. What am I afraid of? I am eternal. I cannot die. The soul cannot die. The soul is Amar. And so what am I afraid of? Of the body? The body is a kappada. Gurbani with Chauthi Pauri, which very clearly, it's already clear. Kappada. When it talks about Amrit Vela, Sachnao Vadiyai Vichar, Karmi Ave Kappada. Is Sarir the Sarir has been used, the word that this body is a cloth, clothing, कपड़ा है, जड़ा कि इस आत्मा ने पहना हुआ है, तो इसको छोड़ना है, ये कपड़ा को. So I'm going to leave this body. So then what if this body is just a kapda? Why am I afraid of losing it? Why am I afraid of anything happening to it? And or इस body दे नाल सभी संबंध, सभी रिश्ते, everything is also related to the body. My children, my mother, my father, everything is to do with this body, not to do with the soul. Because last life or next life, somebody else will be my mother, my father. So what am I afraid of? I'm afraid of my body dying. I'm afraid, because the biggest fear is death of a loved one, right? We don't fear of our body dying, because we know, mar gaye to mar gaye, atma nikal jayegi, kaam khatam. So we're not so bothered, because unconsciously, deeply, we know that we are beyond death, beyond life, nirpo. So we're only afraid of our relatives or friends or loved ones dying, or we are afraid of being bitten or being hurt or going through physical pain, because we are not connected. We're not connected to the fact that this is just a costume, just a cloth, just an attire of one lifetime. When that truth sinks in, then I am beyond
this body, and then I can be nirpo. So when I recite or when I think of these words, Ekonkar, Satnam, Karta, Purakh, Nirpo, and I stop at Nirpo, then I know that I can be fearless because I'm just a soul, tinier than an atom. And what does a point have to be afraid of? There's nothing that can harm a point. And I'm just a point. I'm that tiny. And I make myself so big. My ego is so big. My name is so big. Everything is so huge. When in reality, I'm just a point. A little point. So let's together ponder on these words. Ek Onkar, Satnam, Karta Purakh, Nirpo. Om Shanti. Thank you. See you again next time, and we continue the Mool Mantra.